Hello aspirants, welcome to CSAT FIT course. In this class, we are going to discuss about reading comprehension. See, this is class 1 of reading comprehension. If we see in CSAT paper, in 2018, 20 questions are on reading comprehension. In 2019, 30 questions. In 2020, 25. And in 2021 to 2024, every year, 27 questions are based on reading comprehension. So this makes and very important part of CSAT paper, right? See, one thing we need to discuss about reading comprehension is let's understand what does reading comprehension mean. Reading comprehension, right? See, reading comprehension, see, comprehension or comprehend means to understand what you read. You read. That is what you read. That is comprehend. Comprehend is to understand what you read. Right? To understand what you read. Right? That is basically samajhna. Right? Comprehend. Reading comprehension. Reading and understanding what you have read. राइट समझना जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से समझना दैट इज रीडिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है एज ए ब्यूरोक्रेट you would be studying various reports, you would be studying various cases, you would be studying various news, and you need to understand them, right? Understand the crux, central theme, core, and you need to assume many things based on what you have read, right? तो इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया, right? And if we see reading comprehension में students have two approaches while doing reading comprehension. एक set of students है they rely on reading comprehension. ठीक है, वो students क्या है, they think that they can clear CSAT paper only through reading comprehension or majorly through reading comprehension, right? What they do, they solve all the 27 questions, right? And they take 1 hour to, in fact, 1 hour 15 minutes to solve these 27 questions, right? अब देखो 27 क्वेश्चन से if 27 so remaining 53 questions, remaining 53 questions से maximum they give is 40 to 45 minutes, 40 to 45 minutes they give remaining, right? So that means, right, see, 1/3 of the paper they are giving more than 50% of the time, right? This is not the right approach. अब 27 questions solve करेंगे, how many questions they get correct? They get 20 questions or at max 22 questions they get correct, right? उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे because the nature of questions is like that you cannot get more than 20 to 23 questions right, right? In fact coaching institutes जो बाद में की prepare करते हैं तो that also varies from UPSC's key, right? So it is not possible, right, to get all the questions correct or 25 questions correct out of 27, 26, right? 24, 23 भी मुश्किल है, 22, 22 ठीक होंगे, right? And then these are the first set of students, and then there are other set of students who don't do reading comprehension questions. या वो तो 10 questions करेंगे या 15 questions करेंगे, वो भी लास्ट 15-20 मिनट में करेंगे, right? Basically they think max से ही CSAT पेपर क्लियर करेंगे, right? See, both approaches are extreme approaches. ठीक है, दोनों ही दिक्कत है. जैसे क्या होता है, मान ले 2023 पेपर where maths is difficult, right? If you rely only on maths you wouldn't clear the paper, and 2024 paper where maths is easy and reading comprehension is difficult, right? If you only rely on reading comprehension it will take time and you won't get many questions right, right? You won't be clearing. Or maths easy है तो both approaches are incorrect. So what approach you need to follow is not these two approaches, rather the approach I suggest is the reading comprehension. ठीक है, there are 27 questions and you need to solve all the questions. 27 के 27 solve करना है and that too in 30 minutes to 40 minutes, right? 30 to 40 minutes में you need to solve all the 27 questions.
नॉट मोर देन 40 मिनट्स। अगर एक्सट्रीम केसेस में 40 से 45 मिनट्स ले लिया, अगर 45 मिनट्स से इफ यू आर टेकिंग मोर टाइम इन सॉल्विंग 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, दैट मीन्स यू आर हैंडलिंग योर सीसैट पेपर इनकरेक्टली, राइट? थोड़ा ब्लेंडर हो रहा है, इट विल लूज यू एन अटेम्प्ट, इट विल कॉस्ट यू 1 ईयर, राइट? सो 30 to 40 minutes में you need to solve those 27 questions, and out of 27 questions you need to get the 20 questions right. ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो बढ़िया, ठीक है, उससे कम भी हुआ तो you can try to improve, right? तो अगर मान ले if you are doing, see, 27 questions if you are doing in 30 minutes, right, and you are getting 20 questions right, that is much better than, right, मान ले 27 questions you are solving in 1 hour or 1 hour 10 minutes, right? So and अगर 20 इतने भी सॉल्व करोगे then also maximum you can get 22 questions right. ठीक है, अब 2 questions extra questions के लिए will you be investing 40 more minutes or 30 more minutes, right? So ये नहीं करना है, this you shouldn't do. You should try to solve these 27 questions at max in 30 to 40 minutes. If you are taking more than 40 minutes, at max 45 minutes, that means you are doing a mistake. ठीक है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो, राइट? देन कैसे करना है? विन 30 to 40 minutes I will be discussing in the course in subsequent classes. चीजें समझना है पहले, राइट? First basic rules you need to follow while doing reading comprehension is, first, scan through the passage. स्कैन थ्रू द पैसेज, जैसे पैसेज है वो जल्दी से जल्दी रीड करो, राइट? जल्दी से जल्दी रीड करो, राइट? फर्स्ट रीडिंग, राइट? पहले क्वेश्चंस पढ़ना, ऑप्शंस पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्कैन थ्रू द पैसेज क्विकली, ठीक है? उसमें नो नीड टू स्टक इन ए वर्ड, एक सेंटेंस समझ में नहीं आया, स्ट्रक होने की जरूरत ही नहीं है. देन आफ्टर रीडिंग द पैसेज, देन रीड क्वेश्चन एंड ऑप्शंस. ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ लिया, उसी टाइम 2 ऑप्शंस यू कैन एलिमिनेट. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 2 ऑप्शंस यू कैन एलिमिनेट. ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे अभी, राइट? देन जो 2 ऑप्शंस बचेगा, कुछ ऑप्शंस बचेगा, देन गो एंड रीड दो सेक्शंस ऑफ द पैसेज जहां इन चीजों पे डिस्कस हुआ, या मान ले कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है, देन रीड दोस सेक्शंस ऑफ पैसेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Right? For better understanding, read those sections of the passage. Right? Okay. Then one thing you need to do is, you need to understand is, avoid rereading of passage. Right? See, कुछ एस्पिरेंट्स है वो क्या करते हैं, पैसेज, एक ही पैसेज को 3 बार 4 बार, जब तक समझ में नहीं आया ये है वो है, वो पढ़ते रहेंगे. दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? ठीक है, अवॉइड रीडिंग. अब देखो ये पैसेजेस एनालिटिकल पैसेजेस है, ये मत सोचो कि आप 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया समझ में आ जाएंगे. रेदर ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रक्स ऑफ द पैसेज, किन चीजों में बारे में डिस्कशन हो रहा है, राइट? इंप्रूव योर वे ऑफ रीडिंग इट, योर स्टाइल ऑफ रीडिंग, राइट? रेदर देन रीरीडिंग, वही उससे काम नहीं चलेगा, राइट? सो अवॉइड रीरीडिंग. वंस ट्वाइस समझ में आ गया, नहीं है अगर मान ले 2-3 बार पढ़ लिया समझ में नहीं आ रहा है, देन एक ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ो, राइट? बिकॉज फॉर अस टाइम इज इंपॉर्टेंट. डूइंग दोस 27 क्वेश्चंस इन 30 to 40 मिनट्स इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, मान ले आप बार बार पढ़ के 2 और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा टिक हो गया, क्या होगा? अगर उसके कॉस्ट में यू आर टेकिंग 30 मिनट्स मोर, राइट? अगर उसी 30 मिनट्स में मैथ्स का क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, राइट? फोकस ऑन दैट. ठीक है, अगर पैसेजेस में टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे, आप मैथ्स के क्वेश्चन जो आते हुए कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई ट्राई टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन 30 मिनट्स, 40 मिनट्स. आई नो स्टूडेंट्स who solve these 27 questions in 30 minutes.
इनफैक्ट 40 मिनट्स, राइट? तो उस अप्रोच से जाना है, राइट? दैट इज द वे ऑफ डूइंग इट, राइट? देन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द few keywords with respect to reading comprehension. See, these are the keywords questions में देता है, so we'll be discussing this, right? See, first keyword is, क्वेश्चन में पूछेंगे what is the crux of the passage, or what is the main idea of the passage, or what does author trying to say, or what is the most rational, logical and practical message of the passage, ऐसा पूछेंगे. And this is important because हर साल इस type of questions 8 to 10 questions we are seeing in the paper. इस क्लास में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, राइट? मेन आइडिया और crux of the passage, that means we need to discuss or find out the central theme of the passage, or the most important point the author is trying to say in the passage, right? This is the keyword. These keywords you need to note down. Notes में note down करो, ये बार बार देखना है, right? हर type of question एक तरीके से approach नहीं करना होता है. We'll be discussing in the classes. Then next is, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि corollary. Corollary means a direct or natural consequence of something, right? Corollary means the direct, उसके बाद क्या होगा, right? उस चीजों को find out करना है हमें, right? We'll be doing questions based on each keyword, right? So corollary is direct or a natural consequence of something. Then corroborate, क्वेश्चन में पूछेगा corroborate means evidence that supports an idea. क्वेश्चन में पूछेंगे कि what does author trying to corroborate from this passage, that is we need to find out those evidence which supports some idea, right? Then tone of the passage, that is tone is author's attitude or style. जैसे artificial intelligence पे passage है, ठीक है? So what is the tone of the passage? Tone, author artificial intelligence को लेके negative attitude है या पॉजिटिव एटीट्यूड है? क्या एटीट्यूड है? जैसे जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी को लेके क्या एटीट्यूड है? दैट इज द टोन ऑफ द पैसेज. देन नेक्स्ट इज पर्पस. पर्पस इज दैट इज पॉइंट टू बी टेकन अवे, राइट? पॉइंट टू बी टेकन अवे, राइट? देन नेक्स्ट इज inference. Inference is idea drawn from the facts and evidences. See, this is inference, right? See, this is again very important because questions are being asked every year based on inference. What inference you draw them from the passage? That is an idea drawn from the facts and evidences. जो passage में facts and evidences दिया, उससे क्या idea draw कर सकता है? That is inference. Then is the most important, that is assumption. ठीक है? Every year questions are asked. 10 to 12 questions assumption पूछते हैं. That is not stated but assumed to be true. ठीक है? Assumption में क्या होता है कि चीजें पैसेज में नहीं दिया होता है about these things. We need to assume to be true, not stated but assumed to be true, right? Then next is conclusion. Conclusion is a judgment based on facts. ठीक है? What conclusion you draw from the passage, right? That is a judgment based on facts. Facts से ही conclude होना चाहिए. Then next is implication. Implication or imply, right? What does author try to imply from this passage? That is not explicitly stated, comma, indicates the truth using hints, right? Not explicitly stated, comma, indicates the truth using hints. Then assertion. Assertion is a declaration or an undisputed fact. Assertion is an declaration or undisputed fact. ठीक है? These are the basic questions का keywords है, ये पता होना जरूरी है. अभी मैं क्या करूंगा, ठीक है? See, in this class I will take this and we will discuss questions based on this. Because अब देखो, let's see. See, that is crux. Crux, right? Crux or crucial message, right? Or क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द क्रूशियल मैसेज यू ड्रॉ फ्रॉम द पैसेज, और व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज, राइट? ऑल दिस, राइट? और मैसेज ऑफ ऑथर,
right? Or main idea or central idea of passage, right? Or best sums up the passage. Best sums up the passage. All these means one thing only. So we need to find out the crux or central message, most logical central ideas, best sums up the message, etc. ठीक है, अब ये क्यों important है? If we see in 2021 में 10 reading comprehension questions are based on any of these, right? And that is in 2021. In 2022 7 questions में ये पूछा हुआ है, and in 2023 12 questions में ये पूछा है, and in 2024 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 9 questions में या तो क्रक्स, सेंट्रल मैसेज, मोस्ट लॉजिकल ये पूछा हुआ है. सो दैट इज बल्क more than 1/3 of the reading comprehension passages में ये आ रहा है. And generally these comes under easy questions. जैसे assumption based questions है थोड़ा मुश्किल होंगे, right? So central idea, crux है ये easy, and passages भी छोटे passages होता है, central idea of the passage, crux of the passage पूछते हैं. So these are less time consuming and more rewarding type of passage questions, right? तो कैसे solve करना होता है, कैसे options eliminate करना होता है, that we will discuss in this class, right? So let's do. Right, see, we'll do through the questions, we'll understand reading comprehension का basic से कैसे क्या करना है and all. See, first we will read the passage, and while reading the passage, जैसे इतना passage है, ठीक है, first reading we will just scan through it, right? Scan करना है, ठीक है, just reading करना है, simple reading, right? And कितना टाइम लेना चाहिए? जैसे इतना passage है, so you shouldn't take more than 40 seconds. राइट, 30 सेकेंड्स में पढ़ सकता है, एट मैक्स 40 सेकेंड्स ले लो, राइट? 1 मिनट में एंड लेस देन 1.5 मिनट्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो फर्स्ट वी विल रीड द पैसेज एंड देन वी विल रीड द ऑप्शंस एंड एलिमिनेट कैसे करना है, क्या करना है, वो बेसिक्स में आपको सिखाऊंगा, राइट? चलो ठीक है, लेट्स रीड द पैसेज. यू ऑल्सो पॉज द क्वेश्चन, राइट? पॉज द वीडियो एंड read the passage and then read the question and then attempt the question, then watch for my explanation, right? So that you will get clarity. अगर गलत भी किया, कैसे options eliminate किया, ठीक है, वो सब भी आप एक बार करोगे तब you will get more clarity, ठीक है? So let's read. You also read, I will also read the passage. ठीक है, I'm done with passage. So now let's see how we can eliminate. Which one of the following statement best reflects the crux of the passage? See, the scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. See, crux of the passage. अब passage में किसके बारे में बात हो रहा है? Nutritious food, ठीक है, उसके बारे में. अब nowhere in the passage it is mentioned about universal basic income. So it cannot be the crux of the passage. Crux is what? Central theme of the passage. Passage किसके बारे में? अब this is what? Out of scope. Out of scope. अब out of scope वाली चीज है काटेंगे when we are dealing with crux of the passage or central theme or main idea of the passage etc. जब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? So scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty elimination because it is out of the scope. ठीक है, जो पैसेज के स्कोप से बाहर है, भाई जो डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है, वो काटना है. That see, reading comprehension we need to focus on eliminating options, right? So this is out of scope, we can easily eliminate. Then we must place food based nutrition at the center of our policy debate. ठीक है, ये point it is valid. by food based nutrition, place food based nutrition at the center of our policy debate. ठीक है, अब इसको बाद में डिस्कस करते हैं. Let's check other options. Nutritional status of food should be improved by creating appropriate genetically modified crops. अब देखो, nowhere in the passage they discussed about कि genetically modified crops से nutrition improve करना है कि नहीं करना है, right? So this is again out of scope of the passage, right? So central theme crux में हम out of scope है तो वो काटेंगे, right? That is not the central theme, right? तो
eliminated. Then using modern food processing technologies, we must fortify food items which required nutrient elements. अब food processing का भी कभी बात ही नहीं किया, right? Passage is what? Passage बोल रहा है कि by many people are not eating the right food, right food. ठीक है, for some it's simply decision to stick to food they enjoy but not too healthy. ठीक है, ये एक रीजन है, उससे communicable diseases हो रहा है, right? And which in turn leads to major burden on our healthcare systems that have potential to derail economic progress, which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritional food or lack of affordability leading to monotonous diets. Right? उसके बारे में बात हो रहा है. Nowhere they mentioned about food processing, nowhere they mentioned about genetically modified, nowhere they mentioned about universal basic. Question is on food-based nutrition, right? At the center of policy debate में क्यों होना चाहिए? Because it is making people unhealthy. It is leading to non-communicable diseases, and it has impact on economic progress also, right? Poor का life में भी है. So this all is pointing towards crux of the passage, reflects the crux of the passage, that is we must place food-based nutrition at the center of our policy debate. Policy debate पे वो होना चाहिए, because ये debate ही वो ही हो रहा है, right? We are not making our food nutrition based नहीं कर रहा है, right? So that is option B is the correct answer, right? Option B is the correct answer, right? Now let's see next question. That is, let's read the passage, solve it, and then watch for my explanation. Okay. ठीक है, we are done. Which of the following statements best reflects the crux of the passage? Crux of the passage or central theme of the passage. ठीक है, generation of energy from municipal solid waste is inexpensive. Inexpensive. भाई ये this is not the crux. See, passage is saying कि भाई generation of energy from municipal solid waste is expensive है नहीं. ठीक है, see, is this the crux of the passage? भाई crux of the passage बोल रहा है passage is with respect to segregation of municipal waste and waste to energy etc. ठीक है, अब देखो, in fact with this technology most appropriate converting what is waste biodegradable component in the solid waste is 50%. Biomethanation offers major solution to processing. अब whether it is expensive inexpensive उस पे बारे में discussion ही नहीं हुआ. अब just discussion ही नहीं हुआ, how can it be crux of the passage? So we can eliminate it. Then biomethane is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. अब देखो, बायोमिथनेशन के बारे में बात किया, ठीक है. बायोमिथनेशन ऑफर्स ए मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस. अब देखो, यही बोल रहा है भाई, बायोमिथनेशन है मेजर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. डज दैट मीन इट इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट? भाई ये यही बोला. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द सेंट्रल क्रक्स. अब एक्चुअली क्या होता है कि एक माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट of passage can't be central theme. This is one rule, right? See, एक रूल है, ये नोट डाउन करना. एक बात करेगा लास्ट लाइन में, वो देगा सेंट्रल क्रक्स ऑफ द पैसेज, उसको देखते ही वी कैन इजीली एलिमिनेट. एंड दूसरा क्या होता है कि हमने बोला भाई एक मैन है एक्स इज इंटेलिजेंट, ठीक है. अब ऑप्शंस में क्या देगा? X is the most intelligent person of the class, ऐसा देगा. बट पैराग्राफ में बात करें, X है, X इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है. अब देगा X is most intelligent, दैट इज फ्रॉम जो बेसिक है उसको एक्सट्रीम की तरफ लेके जाएगा, तो उसको काटना है, राइट. सो माइक्रो एलिमेंट है, उसको वो सेंट्रल थीम नहीं हो सकता. एंड एक्सट्रीम ऑफ व्हाट इज गिवन इन पैसेज, ठीक है. अब पैसेज में बोला भाई बायोमिथनेशन ऑफर्स ए मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस. अब इसमें क्या दे रहा है? बायोमिथनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. भाई एक्सट्रीम बोला 10% है, तुम लेके जा रहे हो 100%, तो वो गलत है, राइट. उसको एलिमिनेट करना है. देन segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plants. Yes,
कहीं ना कहीं अब देखो पैसेज में भाई इन इंडिया सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, right? Recycling is mostly in informal sector. More than three-fourths of municipal budget go to collection, transportation, little for processing and disposal. Where does waste to energy fit in all this, right? So segregation of municipal solid waste. Ideally, it fits in the chain after segregation, right? So segregation of municipal waste is first step in ensuring success of waste to energy. Wet collection, वगैरह recycle best landfills. Which technology is most appropriate for converting waste to energy depends on what is in the waste, right? And its calorific value. The biodegradable component of municipal waste वगैरह उस पे बात हो रहा है. तो इस this we can consider it as a crux of the passage. Then next option भी eliminate करता है. देखिए जो eliminate कर सकते हैं हम उसको फोकस करेंगे. We need to eliminate. Then बाकी बचों में वो होता है कि नहीं है उस पे we need to choose the option. ठीक है. The biodegradable component of India's municipal waste is not adequate to provide energy from waste efficiently or effectively. अब देखो बस पैसेज में देखो इधर दिया the biodegradable component of India's municipal solid waste is little over 50%, little over 50%, and biomethanation offers major solution for processing this, right? अब ये दे रहा है भाई इसमें बस यही मेंशन किया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो लिटिल ओवर 50% है. अब इसमें दिया कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट. अब अगेन एक्सट्रीम ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज. इसमें बस ये दिया है कि भाई लिटिल ओवर 50% है, इसमें कि भाई इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट एफिशिएंटली. ठीक है ये बता रहा है तो इसको वी कैन एलिमिनेट इट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट? ठीक है. सो बिकॉज बाकी सब वी हैव एलिमिनेटेड एंड पैसेज में इस सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल इज फर्स्ट स्टेप इन ensuring सक्सेस ऑफ एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, राइट? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. See, this is again question asked in 2023. See, I have chosen first 2023 questions because 2023 में थोड़ा passages easy आया, and then I will be taking up 2022 and 2021 का few questions, and then we will be solving all 2024 का central theme का साथ. ठीक है. Here this is which of the following statements best reflects the most logical, rational and crucial message conveyed in the passage. वो भी central theme और crux of the passage का ही है, right? Let's read the passage. ठीक है. ठीक है. See, now most logical, climate justice should be ingrained in detail in the rules of all new climate compacts or agreements. ठीक है. This is see central along with climate sustainable lifestyles. Climate justice is regarded as significant principle in environmental. Both the principles have bearing on political and economic choices of nation. ठीक है. So far in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among the nations. Yes. So climate justice should be ingrained in detail in the rules of all new climate compacts. And then again, climate justice in judicial context. However, in context climate change, it is scientific as well as political connotations, right? Somewhere it is related, right? So let's don't talk, eliminate it. Then देखो environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. अब पैसेज में कभी भी environmental resources unevenly distributed है ये वो उसका बात ही नहीं किया, right? So this is completely out of scope of passage, right? So this can be easily eliminated. कभी भी बात नहीं किया, right? कि resources कैसे distributed है, environmental resources that be, right? And then there is an impending issue of dealing with huge number of climate change victims or climate refugees. ठीक है. अब देखो climate refugees का कहाँ बात हुआ, ठीक है, political. The crucial question in the next few years will be how resources, technologies and regulations are used to support the victims of climate change. ठीक है. Support the so crucial question है. That is, there is an impending issue of dealing with a huge number of climate change victims or climate refugees. अब देखो, is this the most logical, rational
and crucial message conveyed in the passage. अब देखो, this is what micro element, and micro element cannot be the central theme or most logical, rational and crucial message conveyed in the passage, right? Micro element cannot be, ये इस पे you need to beware, right? जैसे ये आएगा भाई, छोटा सा इश्यू है, उसको एक ऑप्शन बना के दे देगा, right? That cannot be the central message of the passage, you can easily eliminate it. Then climate change in all its connotations is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. पैसेज में कभी बात किया डेवलप्ड कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से क्या है, उनका कभी जिक्र ही नहीं किया. सो दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ पैसेज, राइट. एंड अगेन जनरल जीएस का नॉलेज है, यू शुडंट यूज, राइट. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. अब बचा क्या है? 3 ऑप्शंस वी कैन इजीली एलिमिनेट इट. सो बचा है दैट इज क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, राइट. अब देखो क्लाइमेट जस्टिस का बात हो रही है एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रही है. भाई जैसे इश्यूज है, क्रूशियल इश्यूज, जुडिशियल जस्टिस का ये है वो है, राइट. जस्टिस इन जुडिशियल सेंस इज डिफरेंट, in climate change it is different, right. Justice in climate is not confined to actions of mitigation but also include wider notion. So हमारे climate summits में डिस्कस करके climate justice को एक comprehensive वो बनाना, that is the central theme or most logical or crucial message of the passage, right. ठीक है. So conveyed in the passage, that's it. ठीक है. So option A is the right answer. Now let's see next question. See, this is again question asked in 2023. Which of the best reflects the most logical and rational message conveyed by the author? ठीक है. Let's read the passage. ठीक है. See, most logical. Food yielding trees should replace other trees in rural and tribal areas and community owned lands. अब देखो again this is extreme पे लेके जाना. Passage is what? Passage में यही बोल रहा है कि sourcing food from non agriculture lands जैसे forest है, wetlands है, patches है, ठीक है, उसमें से food जो गिविंग एलिमेंट्स है उनको यूज करना चाहिए इन एडिशन टू एग्रीकल्चर लैंड्स, राइट. enables systematic approach to food consumption. फूड कंजम्पशन में एक रेसिलियंस लेके आएगी. पैसेज इज ऑन दैट. अब ये लिखा है फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज. ये नहीं कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड से अदर एरियाज, अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स भी, राइट. सो एक चीजें बढ़ा के वो करना, राइट. So is replaced? No, ये कभी बात ही नहीं किया. That is not the crucial message of the passage. In fact, it is against the passage, right? अब ये बोल रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि that is food yielding trees should replace other trees in rural and tribal areas. जैसे मान ले रोड के साइड में भी जो ट्रीज है उसको फूड yielding trees रिप्लेस करना चाहिए, वो बोल रहा है. भाई इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो we can easily eliminate it. Then food security cannot be ensured in India with the प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर. अब देखो भाई ये बोल रहा है कि भाई सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड से वो करेंगे तो रेसिलियंस बढ़ेगी, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई करंट फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी एंश्योर्ड बाय करंट मेथड्स. ये है कि भाई एक सिस्टमेटिक अप्रोच बना देगी, उस पर बात हो रहा है. तो ये है कि भाई प्रेजेंट से हो ही नहीं कर सकता. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन इजिली एलिमिनेट, ठीक है. एक एक्सट्रीम फॉर्म में लेके जाना, उसको इजिली वी कैन एलिमिनेट. देन wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry systems to help the poor, right. Agroforestry systems to help the poor. Wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry systems to help the poor. ठीक है भाई, ये बात नहीं किया कभी भी, ठीक है. अब ये ही पूछा, देखो पैसेज में इनफैक्ट सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल lands, uncultivated systems such as forests, wetlands and pastures into agricultural lands will enable a systematic approach to food consumption. अब wastelands, degraded areas का बात भी नहीं किया. अब उनको कन्वर्ट करना चाहिए एग्रोफॉरेस्ट्री में टू हेल्प पोर, वो भी बात नहीं किया. इट अलाउस, जब फॉरेस्ट में जो फूड
नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स में जो फूड है फूड है सोर्सिंग, ठीक है, इट अलाउस रूरल एंड ट्राइबल एरियाज टू सस्टेन देमसेल्व्स होल ईयर एंड स्टीर क्लियरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीकल्चर फूड, ठीक है, सीजन में जब शॉर्टफॉल होता है तो उसमें हेल्प करेगा. सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रीज इज मोर ऑफन रेजिस्टेंट एडवर्स वेदर कंडीशंस, फॉरेस्ट फूड ऑफन प्रोवाइड सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है, ठीक है. अब कन्वर्टेड टू अग्रो सिस्टम्स टू हेल्प पोर, ठीक है. सो फॉरेस्ट फूड आल्सो मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सीजनल गैप्स. भाई ये कि भाई फॉरेस्ट में जो फूड वगैरह वो बेसिकली रिसिलियंस बनाती है, ठीक है. ये नहीं कि वेस्ट लैंड्स और डिग्रेडेड लैंड्स का तो बात भी नहीं किया, तो दिस कैन बी इजीली एलिमिनेटेड. देन बचा हुआ agro ecosystems should be developed in addition to or along with conventional agriculture. पैसेज में यही बात हो रहा है, राइट. अग्रो इकोसिस्टम से, राइट, जैसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स में ये डेवलप करना चाहिए along with, in addition to or along with conventional agriculture, ठीक है. that is the passage. This is again very easy question, right. Now let's see next. Again देखो, mostly we are doing it with respect to option elimination, ठीक है. जो एक्सट्रीम चीजें, जो पैसेज के अगेंस्ट वाले चीजें, जो एग्जैजरेटेड चीजें, उनको एलिमिनेट करेंगे और माइक्रो एलिमेंट से उनको एलिमिनेट करेंगे, राइट. वी गेट मोस्ट लॉजिकल रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर इन द पैसेज. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन क्वेश्चन आस्क्ड इन CSAT पेपर 2023, राइट. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड इन द पैसेज, राइट. लेट्स रीड द पैसेज. ठीक है. शनीज modern statement needs to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them have a better perspective of their roles and responsibilities. अब देखो, this passage is about science, ठीक है. science needs philosophy, ठीक है. and similar way government some say precisely like science for lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relation that statesmanship bears to politics. Movement guided by knowledge and perspective as against, ठीक है, जस्ट एज परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम्स क्वालिटिज्म व्हेन डिवर्स. अब ये कहीं मेंशन नहीं किया. बाय मॉडर्न स्टेट्समैन है नीड टू बी वेल ट्रेन्ड इन साइंटिफिक मेथड्स एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग. ये दिस इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज. बस ये बोला कि भाई मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी फिलोसफी की जरूरत है. इसका मतलब ये नहीं कि भाई मॉडर्न स्टेट्समैन है वो साइंटिफिक मेथड्स वगैरह होना चाहिए. दैट इज नो वे डिस्कस्ड इन द पैसेज. दैट इज the modern statesmen need to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them have a better perspective of their roles and responsibilities. कभी नहीं, ठीक है. then ठीक है, pursuit of politics becomes destructive bedlam when divorced from science and philosophy, ठीक है. next is C. It is not desirable to have governments managed by empirical statement unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom. अब देखो, ये इधर से देखो, movement guided by total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking, just as pursuit of knowledge becomes scholasticism, right. सिर्फ pursuit of knowledge when divorced from actual needs of men and life, so the pursuit of politics becomes a destructive balsam when divorced from science and philosophy, right. तो इसमें भी यही बोल रहा है कि भाई it is not desirable to have governments managed by empirical statement unless well mixed with others who are grounded in learning and रिफ्लेक्ट विजडम. भाई जैसे साइंस को फिलॉसफी चाहिए, गवर्नेंस को भी एक लर्निंग, ग्राउंडेड ऑन लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ विजडम फ्रॉम एम्पिरिकल स्टेटमेंट से चाहिए. सो दैट इज ऑप्शन बी. ये करेक्ट है, बट आप दूसरे ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने के देखते हैं. एज द स्टेटमेंट और ब्यूरोक्रेसी आर द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इट इज डिजायरेबल टू हैव ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अब देखो, कहीं एजुकेशन इन ए सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग इट्स सिटीजन्स इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसॉफिकल
थिंकिंग फ्रॉम ए अर्ली एज। अब इसके बारे में पैसेज में कभी बात ही नहीं हुआ, उसको ट्रेन करना है, ये साइंटिफिक मेथड में ट्रेन करना है। बस यही है कि भाई जैसे साइंस को फिलोसफी चाहिए वैसे स्टेटमेंटशिप को भी फिलोसफी चाहिए। ठीक है, यही बात हुआ। तो ये कि भाई इनको वो सिखाना है, ये सिखाना है सोसाइटी में, नो वे टॉक्ड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज। देन इट इज डिजायरेबल दैट all scientists need to be philosophers as well to as well to make their goal oriented and thus purposeful and useful to society। ये कभी बात किया है क्या? भाई साइंस को फिलोसफी चाहिए, साइंटिस्ट को फिलोसफर होना ही चाहिए। ऑल साइंटिस्ट, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है तो उनको अवॉइड करो। देखो डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट, ये नहीं कि कुछ साइंटिस्ट, ऑल साइंटिस्ट को नीड टू बी फिलोसफर्स होना चाहिए, वो कभी मेंशन ही नहीं किया। गोल ओरिएंटेड पर्पसफुल यही नहीं। सो ऑप्शन बी is the answer for this question, right? Now let's see next question, right? This is a, see this is question asked in 2022, right? 2022 question number 11, right? See, which one of the following statements best reflects the message of author of the passage? Best reflects the message of author of the passage, central theme। ठीक है, let's me read the passage, you also read the passage and answer the question, then you can see the explanation। ठीक है, we assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state। ठीक है, अब देखो दिस पैसेज हैज नॉट टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, पैसेज में वी अज्यूम दैट इन ए डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी का ये बोल रहा है कि भाई सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग में हम ट्रेंड वाला चाहते हैं, बट इन पॉलिटिक्स हम एज्यूम करते हैं कि भाई जिसी को वोट मिला उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना आता है। ठीक है, व्हेन वी आर इल फिजिशियन भी है उसका वो देखते हैं, बट व्हेन द स्टेट इज इल शुड वी नॉट लुक फॉर द गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। ये वी अज्यूम दैट इन ए डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर ए स्टेट। ठीक है, डेमोक्रेसी का बात नहीं किया, बट फिर भी दिस इज वी कैन नॉट इजिली एलिमिनेट इट, फिर भी दूसरा चेक करते हैं, राइट? सी पॉलिटिशियंस शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कभी बोला ही नहीं पैसेज में। देखो पैसेज में क्या बोल रहा है, बट इन पॉलिटिक्स वी presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state। ठीक है, अब देखो ये यही बोल रहा है कि भाई well then when the state is ill should we not look for the service and guidance of the wisest and the best। क्या वाइजेस्ट और बेस्ट का वो नहीं कर सकता है? बस वही पूछ रहा है, वाइजेस्ट एंड बेस्ट ये शुड बी सेलेक्टेड। अब शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोस ट्रेन्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये है ही नहीं, हमें वाइजेस्ट एंड बेस्ट ढूंढना चाहिए, वही बोल रहा है, तो इस कैन बी एलिमिनेटेड। वी नीड टू डिवाइस ए मेथड ऑफ बैरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। यस समवेयर यही है कि भाई वाइज और वो करना है, भाई अभी इनकम्पिटेंस है, ठीक है, तो वो करना चाहिए। तो दिस कैन बी the central theme or message best reflects the message of author of the passage। as voters select their administrator the eligibility of politician to administer state cannot be questioned। no, ये तो इनफैक्ट ये एंटीथीसिस है पैसेज का, पैसेज बोल रहा है कि उनको क्वेश्चन कर रहा है पैसेज में, राइट? सो दिस इज इजीली एलिमिनेटेड। सो अब बचेगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए में। सी वी अज्यूम दैट इन ए डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज, क्या मैसेज देना चाहता है? मैसेज यही देना चाहता है भाई वी नीड टू डिवाइस ए मेथड ऑफ बैरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। यही बोल रहा है कि भाई क्या हमें वो होना नहीं चाहिए। सो ही इज रेजिंग ए क्वेश्चन, वो मैसेज देना चाहता है। वेल देन व्हेन स्टेट इज इल शुड वी नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड बेस्ट। उनको सेलेक्ट करने के लिए हमें एक मेथड डिवाइस करना चाहिए, दैट इज द मैसेज ऑथर ऑफ द पैसेज इज ट्राइंग टू से, राइट? सो ऑप्शन सी इज द आंसर। देन this is again question asked in 2022, which of the following statement best reflects the underlying tone of the passage? Tone is what? Attitude, attitude, right? और author का वो क्या है? So let's see।
ठीक है, ठीक है। Only an educated population can best make use of benefits of economic progress. राइट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भाई इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very happy life of leisure. Happy life of and much leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activities and interests. If leisure population is to be happy, it must be an educated population. Right, यही बोल रहा है। Only an education population can best make use of benefits of economic progress. Yes. तो यही बोल रहा है, पैसेज में भी बोल रहा है कि भाई ये चाहिए, लीजर चाहिए, तो तुम्हें अच्छे से इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर लीजर पॉपुलेशन टू बी हैप्पी, इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द टोन एटीट्यूड, पैसेज में भी यही बोलना चाह रहा है। राइट, तो एजुकेटेड होगा एंड मस्ट बी एजुकेटेड विथ ए व्यू ऑफ एंजॉयमेंट एज वेल एज डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक तुम लीजर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। दैट इज पैसेज इज ट्राइंग टू से, सो दिस इज द टोन ऑफ द पैसेज। और बाकी चीजें देखते हैं। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ लीजर। नहीं, ये तो है ही नहीं ना, पैसेज में ये बात नहीं कर रहा है। पैसेज इज अबाउट तुम्हें एजुकेशन चाहिए अगर लीजर को अच्छा यूज करना है, तो ये नहीं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड बी एम्ड एट लीजर। दैट इज नॉट द टोन ऑफ द पैसेज। राइट, an increase in the education population of a country leads to an increase in the happiness of its people. राइट, नहीं नहीं, ये लीजर आएगा मशीन यूज करने से, और वो लीजर को कैसे यूज करना है वो है, उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए। दैट इज द टोन। ये नहीं कि भाई एजुकेशन से हैप्पीनेस आएगा, नो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि व्हेन लीजर आएगा तो एजुकेटेड है वो उस लीजर को अच्छे से यूज कर पाएंगे। That is the passage, so this can be easily eliminated. Then use of machines should be encouraged in order to create a large leisure population. Passage is not about leisure or use of machine. Passage is about use of intelligence or educated population कैसे use कर पाएंगे। Right, that is the central theme of the passage. Passage में education और leisure को link कर रहा है। Right, so only an education population can best make use of benefits of economic progress. So this is the answer, option A. Right. Then this is question asked in 2021, right? 2021 C. Which one of the following best reflects the crux of the passage above given? Right. Okay. Human societies experiment with different forms of government. अब देखो, this is crux of the passage. by human कितने थी in this passage it mentioned aristocratic government, oligarchic government and democracy बारे में mention किया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, नो, ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में मेंशन ही नहीं किया। ये बेसिकली भाई ये एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, कुछ नहीं किया, एक्सपेरिमेंट करती है कुछ। दिस इज मतलब like completely out of scope of the passage, so we can easily eliminate it। right, any form of government tends to deteriorate by excess of its basic principle। yes, भाई 3 एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दे दिया, तीनों में यही डिस्कस कर रहा है कि भाई अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट reigns itself by limiting too narrowly to the circle within its power। ओलिगार्की गवर्नमेंट, देन डेमोक्रेसी भी उनका बेसिक प्रिंसिपल से वो करती है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी, एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजंस एंश्योर परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। ये कभी बात ही नहीं किया, एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजंस। राइट, then having a government is a necessary evil because tyranny is inherent in any form of government। so tyranny is inherent, no, कभी mention किया, because the passage is about this। any form of government, जो भी form of government है उनका excess principle से, ठीक है, जो अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है narrowly power confine होने से ruins itself, oligarchy government ruins itself, ये democracy ruins itself। so that is the central theme, that is option B। this is again very easy question। right, now let's see, so this is again question asked in 2021, which of the following best reflects the central idea of the passage given above? Right,
ठीक है, सी efficiency of universities would be better in online mode of conducting classroom tuition as compared to conventional method. ठीक है, सी is this the central idea? Central idea क्या है? पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? इट इज अबाउट फ्लिप्ड क्लासरूम. जैसे ऑनलाइन में तुम क्लासेस है वो प्रोवाइड कर दो, वो लोग देख के क्लासेस में आएंगे. ठीक है, क्लासेस में आएंगे तब यू डिस्कस देयर डाउट्स. ठीक है, मेक इट ए डिस्कशन ओरिएंटेड, राइट. तो उसके बारे में बात हो रही है. अब देखो, एफिशिएंसी ऑफ यूनिवर्सिटीज वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासरूम ट्यूशन एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड. नहीं, दिस इज नॉट द सेंट्रल थीम. सेंट्रल थीम ये है कि ऑनलाइन मोड भी रखो, ऑफलाइन मोड भी रखो. ऑनलाइन में क्लासेस दिखाओ, ऑफलाइन में डिस्कस करो, राइट. सो दिस इज नॉट द correct way. Then availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. Yes, this is the case. Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting. भाई कैसे कर सकता है कि उनको क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करो, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करो विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट. ठीक है, बाकी ये भी चल रहा है ना, these universities have made their video lectures free for anyone in the world, so they are making it accessible easier. ठीक है, they are also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their pedagogy, picking the pieces that are appropriate for their needs and building a package around them. So this is making sense. और let's see other options eliminate कर सकते हैं तो फिर उसको eliminate करेंगे. We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet develop better human and social capital. Human and social capital का बात नहीं हो रहा है, right? Then private sector institutions in higher education as well as coaching institutes can take advantages of this opportunity and thrive well. ना private sector का बात हुआ, ना coaching institutes का बात हुआ, so this option can be easily eliminated. ठीक है, अब बचा हुआ क्या है? Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. ठीक है, dilute नहीं कर रहा है, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है कोर्सेस, फिर उनको और कर रहा है. सो दिस इज द ऑप्शन. और ऑप्शन ये भी हो सकता है, बट ऑप्शन ये एफिशिएंसी वुड बी बेटर इन ऑनलाइन मोड. सी ऑप्शन ये भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज मेकिंग ऑनलाइन वर्सेस जो प्रेजेंट है, बट क्वेश्चन इज ऑनलाइन फ्लिप्ड क्लासरूम. दिस इज नॉट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, दिस इज फ्लिप्ड क्लासरूम. ठीक है, क्लासरूम भी इंपॉर्टेंट है अभी भी. ठीक है, जैसे लिसन टू वीडियो लेक्चर्स एट होम एंड स्पेंड क्लास टाइम अप्लाइंग देयर नॉलेज, solving problems, discussing examples, right? So classes be important hai. Professors guide the discussion and fill in whatever necessary, explaining those bits that seem to be eluding the students and throwing in advanced ideas that help to be topical. So classes भी online भी important है. ठीक है, ये ऑफलाइन मिस थोड़ी हुआ, ये ऑफलाइन भी हो रहा है. ऑफलाइन में चीजें एडवांस चीजें डिस्कस हो रहा है. सो वी कैन नॉट से ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल क्लासरूम से, राइट. सो दिस इज इनकरेक्ट, right? Options eliminate कर सकते हैं, so option B is the answer. Now let's see next. See, this is question asked in CSAT paper 2024. So 2024 का अभी सारे questions will be discussing, right? Which one of the following best reflects the central idea of the above passage, right? So let's read the passage and answer the question, then I will be explaining it. ठीक है, so central idea is constructed as a marketplace of use, social media ensures instant access to information. ठीक है भाई, एक्सेस, इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पे कभी बात हुआ है क्या पैसेज पे? कभी नहीं हुआ. ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टेड एज ए मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर, ये तो मार्केट प्लेस व्यूज का तो हुआ, बट इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कभी बात ही नहीं हुआ, राइट. सो दिस कैन बी एलिमिनेटेड. सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशंस but the products built by companies to make profits, right? See, passage में यही इसी के बारे में बात हो रही है, right? That is, not every voice on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entities with high capital can pay more space for their opinions, they are effectively buying the louder voice. Right? Are not ideal or moral institutions but products built by companies to make profits. अब देखो, if political discourse decision matters outsiding opponents till election, then the quality of political, the focus of social media is restricted to promotion of content that generates more user engagement, regardless of how influential the content is. Right? So somewhere it is saying कि भाई ये profit वो
चक्कर में वो करती है, उसको इन्फ्लेमेटरी क्या है वो सब मैटर नहीं करता. देन सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज, ये तो कभी इनफैक्ट दिस इज एंटीथेसिस, राइट. एंड डेमोक्रेसीज को कभी बात ही नहीं किया, स्ट्रेंथन टू डेमोक्रेसीज, राइट. इनफैक्ट ये तो ये बोल रहा है कि भाई ये एंगेजमेंट है, हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट में भी, इनफैक्ट सबको इक्वल वॉइस नहीं मिलता है. सो दिस वी कैन बी इन टुडेस वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ. इनएविटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया कभी बात ही नहीं किया, whether they are inevitable. So these options can be easily eliminated. So बचा हुआ social media are not ideal or moral institutions, but the products built by companies to make profits. Right? Somewhere we are getting that message only. They are not ideal. Right? So option B is the answer for this. Because rest we can eliminate. Access to information का बात नहीं हो रहा. ठीक है? Democracy and well informed, ये भी we can easily eliminate. Option B is the answer. And now let's see next question. The following best reflects the central idea conveyed by the passage. So read the passage. ठीक है. Total eradication of poverty in the country will resolve the issue of underperformance of our school children. Total eradication poverty का कभी बात ही नहीं हुआ पैसेज में. So this is out of the scope of the passage. Right? We can easily eliminate it. Monetary incentives to parents and teachers is a strategy to improve children's academic performance. कभी बात किया है क्या पैसेज में? Right? Monetary incentives to parents and teachers, this also we can easily eliminate. Right? Out of the scope of the passage. Right? So both points are out of scope of the passage. So जो scope से बाहर है उनको निकालना है central theme में. Right? Public policy should ensure that competencies and achievements of young people are aligned with their expectations. Right? So somewhere it is like it is related to, right? So let's not go through it, उसको verify करेंगे, फिर let's check other options, right? जो भी आस पास का हो रहा है तो उसको करते हैं पहले elimination. That's why is important in reading comprehension. India is not going to take advantage of demographic dividend unless some school pass outs go to agriculture. No, right? Demographic dividend go to agriculture. No, ये देखो बेसिकली पैसेज क्या बात कर रही है तो लेट्स डिस्कस. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि बाय द टाइम children reach class 8 the bulk of them tend to age range between 13 years to 15 years. ठीक है. बट इन आवर कंट्री क्या बोल रहे हैं कि उनको ना रीडिंग सिंपल टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक अर्थमेटिक्स भी करने का वो नहीं हो रहा है. ठीक है. एवरी ईयर एलिमेंट्री स्कूल से 25 मिलियन पास हो रहा है, राइट. बट मोस्ट ऑफ देम कैनॉट गो टू फॉर्मल वर्किंग बिकॉज वो 18 साल का नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर 13 टू 18 ईयर्स, राइट. 13 टू 15 ईयर्स वाले, right? For many families, these children are first time families ever go to school. Expect them, such graduates go to higher school. Hardly anyone wants to go back to agriculture. कोई अब ये है, ठीक है, जो पास आउट 8 पास किया, ठीक है, वो कोई भी एग्रीकल्चर करने इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंस आर फॉर लोअर. ठीक है. और उनका एकेडमिक कॉम्पिटेंस भी काफी कम है, ना एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं, ठीक है, ना उनके पास स्किल्स है. दैट इज द पैसेज, राइट. अभी उससे क्या है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर जाना चाहता है या एग्रीकल्चर जाने से डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, वो हो ही नहीं रहा है, उनसे बात ही नहीं किया. सो मेजरली इट इज व्हाट पब्लिक पॉलिसी शुड एंश्योर दैट competencies and achievements of young people are aligned with their expectations. ये इंश्योर करना है कि भाई उनको ताकि अच्छे से स्किल्स डेवलप आ जाए, पढ़ना लिखना आ जाए. ठीक है. वो वर्क फोर्स में दे कैन नॉट एंटर इनटू वर्क फोर्स एटलीस्ट ऑलवेज टिल 18. ठीक है. फॉर देम फैमिलीज चिल्ड्रन फर्स्ट स्कूल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट. बिकॉज बाकी सब आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट, और इनकरेक्ट पैसेज. सो बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज इज हमें पब्लिक पॉलिसी इंश्योर करना है, शुड इंश्योर दैट कंपिटेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग आर अलाइन्ड विद देयर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. उनको एग्रीकल्चर में काम नहीं करना है, ठीक है, तो भाई उनको ऐसा स्किल्स प्रोवाइड करो दो सो दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयड और दे गेट इक्विप्ड विद हायर एजुकेशन. Then which one of the following statement best reflects the thinking of author about science? Right, ठीक है.
ठीक है, ठीक है। सी, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। नहीं, क्वेश्चन कि भाई उसका थिंकिंग ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ अदर अबाउट साइंस। ठीक है, साइंस बेसिकली पैसेज में क्या बात कर रहा है, तो लेट्स डिस्कस इट। बोल रहा है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी वी हम लोग सोचते हैं कि भाई साइंस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये हम लेते ही है, बट इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली जैसे द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड टू न्यूटन और गैलीलियो। गैलीलियो और न्यूटन वो साइंस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे थे। फॉर देम साइंस इज व्हाट? साइंस इज लुकिंग एट द वर्ल्ड एज इट इज, थॉट ऑफ साइंस एज एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज। तो उनके लिए साइंस क्या है? दुनिया जैसे है वैसे देखना। एंड ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज्ड वाज टू टेल द ट्रूथ। तो उनके लिए साइंस दो ही मतलब है, भाई दुनिया को जैसा है वैसे देखना और ट्रूथ बताना। ठीक है, अब द आइडिया दैट साइंस इज ए सोशल एंटरप्राइज इज मॉडर्न। ठीक है, जैसे साइंस एज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मॉडर्न है, एंड इट बिगिंस एट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शुरू हुआ है भाई साइंस पे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर सरप्राइज दैट वी कैन नॉट ट्रेस ए सोशल सेंस फर्दर बैक। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले साइंस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हम कंसिडर ही नहीं करते थे। ठीक है, फर्दर बैक बिकॉज क्यों क्यों नहीं करते थे? बिकॉज वी नर्स द इल्यूजन दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंडेड ए गोल्डन एज। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक गोल्डन एज को उस पे वो करते हैं। राइट नाउ साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के बारे में कभी बात ही नहीं किया। राइट, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट इट। साइंस इज प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस ऑफ पीपल। साइंटिफिक अवेयरनेस ऑफ पीपल को वो किया है। दिस इज नॉट साइंस का ऑथर का लेके ओपिनियन है। राइट, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, ये वो कभी वो नहीं किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस। नो, साइंस का जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से शुरू हुआ, वही पैसेज में बात किया। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन साइंस से हुआ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, बट पैसेज में डिस्कस नहीं किया। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। राइट, यही पैसेज में यही डिस्कशन हो रहा था भाई, ट्रूथ, ठीक है, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। राइट, तो दिस सीम्स बेस्ट। यही साइंस का वो है कि भाई ऑथर बोल रहा है साइंस का दो वो है, वन इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर इज ट्रूथ और नो द वर्ल्ड एज इट इज। ठीक है, सो इससे वो हो जाएगा। राइट, साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। राइट, now let's see next. Okay, which one of the following statement best reflects central idea of the above passage asked in 2024? So let's read the passage. So let me read the passage loud only. Right, when a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between parents and the child, since the latter considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power. Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. The options they express, however, are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret. Which one of the following central idea of the passage? Parents in general may not be much help when children are in their way to becoming adults. ठीक है, पैसेज में ये मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, यस, यही पैसेज में बात हो रही है। राइट, सी, पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। सी, पैसेज में क्या बात हो रहा है? पैसेज में बोल रहा है व्हेन चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस देयर इज एन एप्ट टू बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। ठीक है, जब चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस तो पेरेंट्स और चाइल्ड में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? क्योंकि बच्चा जो है, सिंस द लेटर दैट इज बच्चा जो later mentioned है that he considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs. तो जब बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं खुद को मैनेज कर लूंगा, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट अरेज होते हैं। बट पेरेंट्स क्या सोचते हैं? while the farmers are filled with parental solicitude. राइट, सोलिसिट्यूड मतलब मैं सब संभाल लूंगा, उससे होता है which is often disguised for love for power. राइट, बच्चों पे कंट्रोल वाला पावर। पेरेंट्स कंसिडर usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province.
ठीक है, पेरेंट्स कंसिडर कर सकते हैं भाई जो एडोलेसेंस में होता है वो हमारा प्रोविंस है, ठीक है। द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डॉगमेटिक, जो पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं डॉगमेटिक दैट यंग सेल्डम कन्फाइड देम एंड यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट, ठीक है। तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता है तो वो अपने हिसाब से चलने लग जाता है बच्चा, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होती है। सो वही पैसेज में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एडल्ट्स। एस एडोलिसेंस से एडल्ट्स जब बनता है तो वो होता है, तो दिस इज करेक्ट, राइट। और नेक्स्ट ऑप्शन है जो वो देखते हैं वो एलिमिनेट करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलिसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइव्स इज अननेसेसरी। अब देखो एक्सट्रीम ये बोल रहा है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसके ये इसका मतलब ये नहीं है ना भाई पेरेंट्स का बिल्कुल जरूरी नहीं है, अननेसेसरी नहीं है, क्योंकि भाई चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे ऑफ बिकमिंग मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, ठीक है। सो अननेसेसरी है भाई, अननेसेसरी पैसा चाहिए तो नेसेसरी है, राइट। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग चिल्ड्रन अप प्रॉपर्ली। नो, न्यूक्लियर फैमिलीज को जिक्र ही नहीं किया, आउट ऑफ स्कोप, सो दिस कैन इजीली वी कैन एलिमिनेट। देन इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट्स टेंड टू बी स्टबॉर्न, डिसोबीडिएंट एंड केयरलेस। ये भी कभी मेंशन ही नहीं किया, मेंशन क्या किया, the options they express, जो पेरेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं however are so dogmatic that young seldom confide them and usually, so इसको एक अगेन एक्सट्रीम फॉर्म में भाई उसको ये थोड़ी बताया पैसेज में कि चिल्ड्रन है ओबीडियंट नहीं है, स्टबॉर्न है, ये केयरलेस है, तो ये नहीं किया, तो ऑप्शन ये इज द आंसर, राइट। अगेन वेरी इजी पैसेज, दिस वन वी कैन इजीली आंसर। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन, which of the following reflects the crux of the above passage, right? So this is in a robust democracy, reality however inconvenient it may be finds its expression both in speech of political leaders and other social forms of assertion. The existence of real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normatively responsible media through its communication effect has a responsibility to circulate the content of reality without distortion, ठीक है। अब पैसेज में क्या हो रहा है भाई, मीडिया है वो अच्छे फैक्ट्स विदाउट डिस्टॉर्शन सर्कुलेट करना चाहिए। देन सी रेस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। यस भाई पैसेज में क्रक्स ऑफ द पैसेज में वही है भाई, मीडिया देखो इन रोबस्ट डेमोक्रेसी इनकन्वीनियंट इट फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन बोथ इन स्पीच ऑफ पॉलिटिकल एंड अदर सोशल फॉर्म्स ऑफ assertion. The existence of real through circulation in and by the media as well as argumentative, the normative responsible media through its communication effect has a responsibility to, this is the crux of the passage भाई, मीडिया है वो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ आइडियल डेमोक्रेसी, भाई फेक न्यूज का कभी बात ही नहीं किया, इनहेरेंट है आइडियल डेमोक्रेसी में, तो बेसिकली राइट, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट। There should not be any kind of restrictions on the freedom of expression in ideal democracy. भाई restrictions होना चाहिए नहीं, बेसिकली यही बोल रहा है कि भाई मीडिया है वो फैक्ट्स डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इट इज अगेन आउट ऑफ द स्कोप। देन irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled in an ideal democracy. उसको कंट्रोल कर सकता है नहीं कर सकता है वो कभी बात ही नहीं किया, सो दिस ऑल्सो वी कैन एलिमिनेट एंड दिस इज responsible media should not distort the real in, so this is the crux of the passage. क्रक्स इज विथ रेस्पेक्ट टू जो इंफॉर्मेशन है वो क्रक्स इधर रिवील हो रहा है इस पैसेज में, ठीक, ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, see which of the following statement best reflects the crux of the above passage. Green growth involves rethinking growth strategies with regard to the impacts of environmental sustainability and environmental resources available to poor and vulnerable, ठीक है। In rethinking growth we need to focus on current reality of resource constrained world, resource intensive and in particular energy intensive process will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of sea of poverty, ठीक है। Environmental sustainability is inimical in our objective of achieving high rate of GDP growth. High rate of GDP growth का कभी बात ही नहीं हुआ। See, basically पैसेज में क्या बता रहा है भाई, green growth involves rethinking growth strategies with regard to impacts on environmental sustainability and environmental resources available to, so green growth के है तो जब सोचेंगे तो उसमें हमें environmental sustainability भी ध्यान होना चाहिए एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर एंड वल्नरेबल पे होना चाहिए,
right? In rethinking growth, we need to focus on current reality of resource constrained world. The resource incentive and in particular energy intensive process will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid economic debt. ठीक है, उस पे तो बेसिकली ये जीडीपी ग्रोथ का ज्यादा बात नहीं हुआ, बेसिकली ये ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का बात हो रहा था, right? Then poverty eradication is not possible without a rapid economic growth and a consequent environmental degradation. Poverty reduction का बात ही नहीं हुआ, right? Maintaining high environmental standards is now a prerequisite for achieving studies sufficient and inclusive growth. As यही तो बात हो रहा है. See, somewhere see is frugal development strategies we need to, if we are to avoid economic debt and are a world in which only a small elite are able to enjoy affluence in the midst of sea of poverty. ठीक है भाई, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसके लिए बाय मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स करना वो जरूरी है, राइट? एनर्जी प्रोसेस विल मेक वे फॉर एफिशिएंट रिसोर्सेस. With large populations, rampant poverty, and limited resources of today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable. Inevitable का क्वेश्चन इज भाई, हमें ग्रीन ग्रोथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्सेस मैनेजमेंट, स्पेशली पुअर एंड वल्नरेबल का, उस पे फोकस है. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ये कि भाई ये इनइक्वालिटी इनएविटेबल है, भाई इनएविटेबिलिटी का बात ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पे बात हो रहा है. सो दिस इज ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. Which one of the following best reflects the most logical and rational message conveyed by the above passage? ठीक है, unlike religion and science, poetry does not posit or expect any belief in absolute truth. Those forces or individuals who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial, tyrannical. ठीक है, truth usually does not admit any contradictions or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not of much use for poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, full of contradictions. Against the tyranny of truth, poetry remains a partition of democratic reality. Against the arrogances of power, wealth and hierarchy, poetry proposes both humility and defense. ठीक है भाई, जो साइंस है और रिलीजन है, ठीक है, ये क्या ट्रूथ में बिलीव करता है या वन वे और नो वे, उस अप्रोच में बिलीव करता है. ऑन द अदर हैंड पोएट्री जो है, ठीक है, पोएट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ और अब्सोल्यूट ट्रूथ. अब्सोल्यूट ट्रूथ ये है, अब्सोल्यूट ट्रूथ है, उस पे बिलीव नहीं करता. ठीक है, दैट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, राइट? इट इज द पोएट्री, नॉट साइंस और रिलीजन, विच रिकॉग्नाइजेस एंड accepts imperfections in humans. Yes, it is the poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. Because भाई जो पोएट्री उसी में बिलीव करते हैं भाई, लेकिन रिलीजन एंड साइंस क्या है, वो अब्सोल्यूट ट्रूथ पे बिलीव करता है. ठीक है, फोर्सेस इंडिविजुअल्स हु क्लेम ट्रूथ ग्रास्प, ठीक है, टिरानियल ट्रूथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी contradictions or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not much used to poetry, right? So ये हो सकता है. Let's check other options. Truth is revealed through science or religion, and poetry is anathema truth. अब poetry is anathema means poetry is against truth. भाई poetry is not against truth. Poetry ये कि unitary truth में believe नहीं करता. ठीक है, so this option we can easily eliminate it. And truth is revealed through science and or religion. No, religion से truth कहाँ होगा, वो absolute truth में believe करता है. So it does not mean ट्रूथ रिवील होता है रिलीजन से या साइंस से, राइट? वो एब्सोल्यूट ट्रूथ में बिलीव करता है. दैट इज द पैसेज, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट इट. पोएट्री इज रोमांटिक एंड इमेजिनरी and is about feeling, whereas science and religion are about truth. No, it is passage is talking about they want absolute truth establish करना. It's not about are about truth. No, ये नहीं है. And poetry romantic है, imaginary है, नहीं, romantic imaginary, ठीक है. Poetry abides by the plurality of life and existence. Plurality of life, that is, recognizes, accepts and imperfections of humanities and existence, right? So ये हो सकता है. In a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. अब देखो, ये माइक्रो एलिमेंट को मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है. So option D. In a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance, right? See, against the tyranny of truth, the poetry remains a partition of democratic reality. Against the arrogance of power, wealth and hierarchy, poetry proposes both humility and defense, right? इससे हम ये नहीं कर सकते. In a world of violence,
poetry is a form of dynamic resistance, right? This is not the most logical. Yeah, ठीक है. In a world of violence, right? Violence कहाँ है world में? So again ये भी incorrect है. So correct is it is poetry, not science, which recognizes and accepts imperfections in humans. Imperfections in humans. Humans ये इधर से आएगा. That is poetry abides plurality of life and existence of humans also. On the other hand, science try to establish. Yeah. Option A is the correct answer, right? So that's it. So with this, we are done. So in this class, we discussed questions based on idea, crux, most logical and rational message, etc. ठीक है, ये basically easy questions होते हैं, easy passage questions. So अगर पैसेज में अगर मान ले आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो इन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, बिकॉज यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन लेस देन 1 मिनट, लेस देन 1.5 मिनट्स, राइट? सो उसके बाद जैसे in next classes we'll be discussing inference based questions, right? Imply based questions, assumption based questions, corollary based questions, etc, etc, right? So that's it for this class. See you in the next class.